Hello everyone, welcome back in the biology classes with Chandrakant sir. Student, I hope that you all are fit and fine. The summer season has already started. So take care of your health. Student, now let us continue with our topic. Our today's topic is pollen-pistil interaction. Friends, ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, जो हमारा टॉपिक था वो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन था. उसमें एक चीज छूट गया था, वो था कि पर्पस ऑफ बैगिंग और पर्पस ऑफ इमेस्कुलेशन. क्लियर? So emasculation you already know, the removal of anther or the removal of stamens. Clear? तो इसका पर्पस होता है to check the self pollination. Clear? emasculation का मेन पर्पस है to check the self pollination. Clear? और बैगिंग का जो मेन पर्पस होता है, it is just to avoid the contamination with the unnecessary or unusual pollen grains. कोई दूसरे स्पीशीज का पॉलन और अनडिजायर्ड पॉलन स्टिग्मा पे ना पहुंच जाए, इसीलिए इमेस्कुलेटेड फ्लावर को उसकी बैगिंग कर दी जाती है. क्लियर? सो दिस इज द पर्पस ऑफ बैगिंग. क्लियर? बैगिंग अवॉइड्स कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा विद द अनयूजुअल पॉलन ग्रेन्स और अननेसेसरी पॉलन ग्रेन. क्लियर स्टूडेंट? आई होप दैट यू आर नाउ एबल टू अंडरस्टैंड. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. Today's topic is the pollen-pistil interaction. Clear student? तो pollen-pistil interaction होता क्या है? You have already studied the topic pollination. So pollination से लेके clear entry of pollen tube inside the ovule, all these events are included in the pollen-pistil interaction. So pollen-pistil interaction क्या है? Pollen-pistil interaction, so all the events from pollination, germination of pollen grain on the stigma up to the entry of pollen tube inside the ovule, ये सब मिला के कहलाता है pollen pistil interaction. यानी pollen grain स्टिग्मा पे गया, जर्मिनेट किया, pollen tube का फॉर्मेशन हुआ और pollen tube की एंट्री हो रही है ओव्यूल के अंदर. यहां तक के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं pollen pistil interaction. क्लियर स्टूडेंट? अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या हर वक्त हर समय जब भी पॉलिनेशन होता है तो क्या राइट टाइप के पॉलन ग्रेन्स जाते हैं स्टिग्मा पे? नहीं. पॉलिनेशन डज नॉट इंश्योर द डिपोजिशन ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन ऑल द टाइम. क्लियर? ऐसा नहीं है कि जब भी पॉलिनेशन होता है तो हर वक्त राइट टाइप के पॉलन्स आर ट्रांसफर्ड. क्लियर? तो यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में मैं आज जो टॉपिक मेरा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्लियर स्टूडेंट? आप देखते हो एक बागीचे के अंदर बहुत तरह के फ्लावर्स होते हैं, तमाम तरह के प्लांट्स होते हैं. क्लियर? मैंगो भी है, पपैया भी है, जामुन का पेड़ भी है, डिफरेंट टाइप के फ्लोरिंग प्लांट्स आर देयर. और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका जो फ्लोरिंग सीजन होता है सेम होता है. तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक तो पॉलिनेशन नॉन डायरेक्शनल होता है. क्लियर? और पॉलन को क्या पता कि हमें कहां जाना है. इंसेक्ट किसी फ्लावर पे बैठा, एक फ्लावर पे बैठा, पपैया के फ्लावर पे बैठा, फिर गुआवा पे चला गया, गुआवा से उठ के वो मैंगो पे चला गया. तो इस तरह से होता रहता है, किसी का पॉलन कहीं पे भी जा सकता है. क्लियर? तो क्या वो सारी चीजें पॉलिनेशन में आ जाती है? हम कह सकते हैं कि पॉलन ग्रेन डिपॉजिट हो गया स्टिग्मा पे, लेकिन क्या अब स्टिग्मा सबको अलाउ करेगा? हमारा टॉपिक आज का यही है. क्लियर? सो स्टूडेंट, हमारा स्टिग्मा जो होता है, हमारे फ्लावर का स्टिग्मा जो होता है, वो राइट टाइप के पॉलन ग्रेन को पहचानता है. क्लियर? सो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन जब भी होता है, आप देखिएगा, इट ऑलवेज थ्रू सम केमिकल. क्लियर? So whenever pollination takes place, a variety of pollen grains they fall on the stigma. Some are right type of pollen grains, some are wrong type of the pollen grain. The right type of the pollen grain or the correct pollen grains they are called as the compatible pollen grains, and the wrong type of pollen grains they are called as the incompatible pollen grains. Clear student? किसी और species का pollen अगर stigma पे आता है तो that is called as the wrong type of pollen or incompatible pollen.
और अगर सेम स्पीसीज का स्टिग्मा सेम स्पीसीज का पॉलन स्टिग्मा पे आ जा रहा है तो दैट इज द राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन, दैट इज द कॉम्पेटिबल पॉलन ग्रेन। अब देखिए क्या होता है स्टूडेंट, दिस इज द स्टिग्मा, क्लियर, आप देख सकते हो स्टिग्मेटिक सरफेस, क्लियर। हम थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे ये पैपिला होता है, ये एक पैपिला होता है, स्टिग्मेटिक पैपिला इसको बोलते हैं, क्लियर। और उसकी वॉल में इतनी सारी लेयर्स होती हैं। आप ये देखोगे दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे पैक्टोसेलुलोजिक वॉल होती है, फिर क्यूटिकल होता है और पेलिकल होता है। इस तरह से इतनी लेयर्स होती हैं, क्लियर। सो व्हाट हैपेंस कि जब पॉलन ग्रेन एडहेयर करता है स्टिग्मा पे तो दो तरह के पॉलन एडहेयर कर सकते हैं, एक कॉम्पेटिबल पॉलन ग्रेन हो सकता है, दूसरा इनकॉम्पेटिबल। कॉम्पेटिबल मैं बार बार बोल रहा हूं मीन्स राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स, इनकॉम्पेटिबल पॉलन मीन्स रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन, क्लियर स्टूडेंट। तो जब यहां पे डिपॉजिट हो गया पॉलन ग्रेन तो ये कब जर्मिनेट करेगा और कब जर्मिनेट नहीं करेगा। इफ द पॉलन ग्रेन्स आर कॉम्पेटिबल, यहां आप देख सकते हो मैंने अलग से बनाया है, इफ द पॉलन ग्रेन्स आर कॉम्पेटिबल यानी राइट टाइप के अगर पॉलन ग्रेन्स होते हैं then what happens, they are allowed to germinate on the stigma, clear। यानी यहां पे जैसे ही आप जाएगा ये पॉलन डिपॉजिट होगा स्टिग्मा पे अगर ड्राई स्टिग्मा है या वेट स्टिग्मा है तो वहां पे जाने के बाद पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द स्टिग्मा, क्लियर। उसकी एंटाइन जो होती है थोड़ा सा स्वेल करती है, एक्साइन को रप्चर करेगी, क्लियर, और पॉलन ट्यूब कम्स आउट। यानी यहां पे स्टिग्मा ने पॉलन ग्रेन को अलाउ किया। और खास बड़ी बात यह होती है कि द पॉलन ट्यूब इट रिलीजेस और द पॉलन ग्रेन रिलीजेस सर्टेन प्रोटीन्स, क्लियर, एंड स्टिग्मा आल्सो हैज सर्टेन प्रोटीन। और भी केमिकल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं। तो अगर राइट टाइप के केमिकल्स हैं तो दे एक्ट एज द रिसेप्टर, यानी देयर इज अ कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन द पॉलन ग्रेन एंड द स्टिग्मा एंड दिस डायलॉग इज थ्रू द केमिकल्स। तो अगर राइट टाइप के केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं यहां से पॉलन ग्रेन से तो स्टिग्मा उसको रिकॉग्नाइज करता है और अलाउ कर देता है जर्मिनेट करने के लिए, क्लियर। यानी राइट टाइप ऑफ pollen grains are allowed to germinate, clear, and this is only through the continuous dialogue and that dialogue is the chemical dialogue। यानी यहां से जो केमिकल रिलीज हो रहे हैं pollen grain से, जो प्रोटीन रिलीज हो रहा है, स्टिग्मा से भी जो प्रोटीन रिलीज हो रहा है, दोनों मैच करेंगे, स्टिग्मा उसको पहचानेगा, रिसीव करेगा, तब उसको अलाउ करता है जर्मिनेट करने के लिए और इन दिस वे द पॉलन ट्यूब इट इमर्ज आउट, क्लियर। और यहां से आप देखोगे पैक्टोसेलुलोज की जो लेयर होती है उसके थ्रू पॉलन ट्यूब आगे की ओर जाता है, क्लियर। इन केस स्टूडेंट रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर देयर और यू कैन से द इनकॉम्पेटिबल पॉलन ग्रेन्स आर देयर, तो दे आर नॉट अलाउड टू जर्मिनेट, क्योंकि यहां पे आप देखोगे एक कैलोज प्लग जो होता है वो डेवलप कर जाता है, वो पॉलन ट्यूब को आगे जाने ही नहीं देता। इट विल नॉट अलाउ द पॉलन ट्यूब टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर कभी गलती से ही पॉलन जर्मिनेट भी कर गया तो पॉलन ट्यूब आगे नहीं जा सकती बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, ऑब्स्टिकल डेवलप्स एंड दैट इज द कैलोज प्लग। ये कैलोज प्लग होता है, क्लियर। और कहां पे डेवलप हो जाता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में और पैक्टोसेलुलोज लेयर के बीच में ये डेवलप कर जाता है, क्लियर। तो ये मैंने स्टूडेंट आपको बताया क्या, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, क्लियर। आप ध्यान से सुन लो। एज सुन एज द पॉलन ग्रेन्स लैंड ऑन द स्टिग्मा it is hydrated due to which exine and intine proteins are released on the stigmatic surface which work as the receptor site for the pollen wall protein to check its compatibility, clear। यानी सब कुछ जो कंपेटिबिलिटी चेक की जाती है वो केमिकल के थ्रू होता है, यानी प्रोटीन के थ्रू होता है। एक्साइन इंटाइन से जो प्रोटीन रिलीज हो रहे हैं वो स्टिग्मेटिक सरफेस उसको पहचानता है और अगर राइट टाइप के पॉलन है, मैच कर गए प्रोटीन, तो दे आर अलाउड टू जर्मिनेट।
रॉन्ग टाइप के हैं, गलत प्रोटीन रिलीज हो गए, स्टिग्मा पहचान नहीं पाया, तो वो उसको अलाउ नहीं करेगा। क्लियर स्टूडेंट? सो यहां तक का इवेंट जो कहलाता है दैट इज द पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। दिस इज द वे हाउ द स्टिग्मा रिकॉग्नाइजेज द राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन। क्लियर स्टूडेंट? अब नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द फर्टिलाइजेशन। क्लियर? फर्टिलाइजेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, germination of pollen grain on the stigma, formation of pollen tube, and entry of the pollen tube inside the ovule, and then double fertilization. Till then, watch this video again and again. Thank you very much. Which results in the transfer of pollen to the stigma is of two types: self-pollination and cross-pollination. Continuous self-pollination or inbreeding throughout successive generations, however, is not desirable as it leads to inbreeding depression, a condition characterized by a decrease in genetic vigor and vitality, which results in reduced fitness in offspring. In fact, when genetically similar parents self-pollinate, the offspring are more likely to have genes in a homozygous condition. Moreover, the recessive harmful or undesired alleles, which otherwise would not have expressed themselves in heterozygous parents, get expressed in the homozygous offspring. Such offspring with undesired traits also face the risk of being eliminated during the process of natural selection. These undesirable traits include reduced pollen output, decreased quantity and quality of seed production, to name a few. To counter inbreeding depression, many flowering plants have developed several mechanisms called outbreeding devices that discourage self-pollination and promote cross-pollination. These devices include dichogamy, harcogamy, self-incompatibility, pollen prepotency, and unisexuality. In dichogamy, which is observed in bisexual flowers, the anther and stigma of the flower mature at different times. Dichogamy is of two types: protandry and protogony. In protandry, which is observed in plants such as maize, pollen is released before the stigma becomes receptive. That is, andrecium of the flower matures earlier than the gynoecium. Whereas, in protogeny, which is observed in millet or bajra, the gynoecium matures prior to the andrecium. That is, the stigma becomes receptive long before the pollen is released. In some plant species, such as hibiscus, the anther and stigma are placed at different heights, which disallows self-pollination by preventing the pollen from falling onto the stigma. This condition is called harcogamy. However, other plant species, such as passiflora, have developed a genetic mechanism called self-incompatibility or self-sterility. Adept at preventing both orthogamy and geitonogamy, self-incompatibility prevents self-pollen, that is, pollen from the same flower or different flowers born on the same plant, from germinating or developing a pollen tube, a move that prevents fertilization of the egg.
pollen prepotency is another mechanism that prevents self-pollination in certain plants such as Dolichos. This mechanism allows the pollen from another plant of the same species to germinate earlier than the pollen of the same flower. Did you know that the production of unisexual flowers is also a mechanism developed to thwart self-pollination? In the case of monoecious plants, such as coconut, unisexual flowers prevent orthogamy, but not gytonogamy. However, in the case of dioecious plants, such as papaya, unisexual flowers prevent both orthogamy and gytonogamy. Interestingly, post-pollination, the pollen and pistil start interacting with each other by releasing a series of chemicals. This interaction allows the pistil to recognize whether the pollen is the right or wrong type. The right type of pollen implies that the pollen belongs to the same species as that of the stigma. The wrong type, on the other hand, means that the pollen is self-incompatible or belongs to other plant species. The pistil rejects the wrong type of pollen by preventing it from germinating or disallowing the growth of the pollen tube. Conversely, if the pollen is of the right type, the pistil accepts the pollen and initiates post-pollination events. Post-pollination events include the germination of the pollen and the formation of the pollen tube, which emerges through one of the germ pores. When the pollen tube starts growing through the stigma and moving towards the ovary, the generative cell, in the case of a two-celled pollen grain, divides mitotically to form the two male gametes. However, in a three-celled pollen grain, the pollen tube carries two male gametes from the point of germination. The pollen tube then grows through the style and advances towards the ovary, which contains the ovule. The pollen then makes its way through the micropyle, the entry point of the ovule, and pierces the filiform apparatus that guides its journey towards the synagid. All these events, from pollen deposition on the stigma until the pollen tube enters the ovule, are together referred to as Pollen-Pistil Interaction. The study of pollen-pistil interaction has generated a lot of interest among breeders involved in artificial hybridization, a crop improvement program to produce commercially superior crops with desirable traits such as insect resistance. This is because the knowledge gained in this area has the potential to help breeders manipulate this interaction, including those of incompatible pollination, to get a desired hybrid plant. For instance, breeders know that for successful crossing, it is necessary to protect the stigma from unwanted pollen and expose it to the desired pollen. This is achieved through emasculation and bagging, two techniques developed for artificial hybridization. In emasculation, which is carried out in female plant-bearing bisexual flowers, a pair of forceps is used to remove the anther before it dehisces. Emasculation is followed by bagging, a technique where the emasculated flower is wrapped in a bag, usually made of butter paper, to prevent pollination by unwanted pollen. When the stigma of the bagged flower becomes receptive, it is dusted with mature pollen grains collected from the selected male parent.
the flower is rebagged and left to produce fruits. In the case of female plant-bearing unisexual flowers, emasculation is not needed. Instead, the female flower is bagged before it blooms. After the flower has bloomed and the stigma has become receptive, the desired pollen is dusted over the stigma before rebagging the flower. In this way, pollen-pistil interaction allows the plant to recognize the pollen and promote its germination for fertilization to take place. Moreover, gaining knowledge in this field enables the growth of a superior variety of crops.